So today what I have for you? Today I have for you a beautiful sonnet of जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का एक खूबसूरत सोनेट है, उसको लेकर के मैं बात करूंगा। क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको वहां पे उस पोयम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, एंड व्हाट डू यू नो अबाउट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखती है, इन सब चीजों को लेकर के मैं बात करूंगा। आप इन सबको नोट करते चलिएगा कि किन किन पॉइंट्स को लेके हमें बात करनी। तो शेयरिंग विद यू दैट व्हाइट बोर्ड, and here you will come to know about John Milton's and his blindness, and what you have to remember कि जो जॉन मिल्टन का and his blindness है, it's a sonnet. Yeah, on his blindness, on his blindness, Blindness, on his blindness आपका सेकेंड सेमेस्टर में ये दूसरी पोयम है जो सिलेबस में है। अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो आप कम से कम 4 पोएम्स को कवर कर लेंगे। कौन कौन सी 4 पोएम्स है? ब्रेक 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 मैंने कवर करा दिया है। ट्रू लव या लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, शेक्सपियर का जो सॉनेट है पहला, उसको मैंने कवर कराया है। फिर मैंने आपको एक पोएम कवर कराया है, माई लास्ट डचेस। जहां तक मुझे याद है कि मैंने आपको माई लास्ट डचेस भी कवर कराया है। और ये फोर्थ पोएम होगी जो हम लोग कवर करेंगे। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, मुझे लगता है इंटरमीडिएट में आपने इसे पढ़ा होगा। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस पहला पॉइंट की इट्स अ ब्यूटीफुल सॉनेट। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉनेट, SONNET ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट्स अ sonnet based on Petrarchan model, based on Petrarchan model, Petrarchan, Petrarchan model, based on Petrarchan model. तीसरा पॉइंट, Petrarchan sonnet, Petrarchan sonnet has 3 quatrains, not 3 quatrains, sorry. Petrarchan sonnet has an octave and sestet, has an octave and sestet. I just want to know what do you mean by octave and what do you mean by sestet? Already I explained. I have taken a lecture forms of poetry. सर ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन, सेस्टेट का मतलब 6 लाइन्स। Very nice. Octave means 8 lines stanza and sestet means सेस्टेट का 6 lines. 6। Octave is 8 lines stanza, 8 lines stanza, and sestet means 6 lines stanza.
Octave means 8 lines stanza and sestet means 6 lines stanza. Third, next point, fourth point, its rhyme scheme. Scheme is A B B A A B B A. ए आपका ऑक्टेव का राइम स्कीम 8 लाइन का। फिर सेस्टेट का सी डी ई सी डी ई या समटाइम्स और करके समटाइम्स सी डी डी सी। इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आपका पेट्राचल सॉनेट के अलावा या जो आपका इटालियन सॉनेट है, आई आल्सो टेल यू द बेसिक फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट, उसका राइम पैटर्न मैंने आपको बताया था। सो हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू one significant point, and what is that? That is key. Whenever you go with these points, whenever you follow these points, always keep in your mind कि पेट्रार्चल सोनेट एक दुनिया का पहला वो एक पैटर्न ऑफ सोनेट रहा है। बाद में इट बिकेम सो पॉपुलर, पीपल फॉलोड इट, ये काफी पॉपुलर हुआ, लोगों ने इसको फॉलो किया। सो यू फाइंड व्हाट ए बी बी ए सी डी। तो जॉन मिल्टन ने भी क्या किया, जिस पैटर्न को फॉलो किया वो पेट्रोर्चन पैटर्न था। इवन शेक्सपियर केम बिफोर जॉन मिल्टन। शेक्सपियर हैज रिटन 154 sonnets, and he gave a well-known established pattern of sonnet that was A B B A B B A, not A B B A A B C D C D EF G G. But you will come to know कि Shakespeare, John Milton didn't follow Shakespeare because uh, till the time of John Milton, Shakespeare was not a famous sonneteer. Shakespeare was not a famous dramatist. Shakespeare became famous after 17th century when John Dryden, Dr. Samuel Johnson, and other critics started to talk about that man. So these things you find whenever you read any sonnet, first you must know कि on which pattern it is based, ये किस पैटर्न पर। चूंकि सोनेट 14 लाइन की पोयम होती है, वो 14 लाइन का एक फिक्स्ड पैटर्न होगा, या तो पेट्रार्चन पैटर्न पर होगा या तो वो शेक्सपियरियन पैटर्न पर होगा। थोड़ा बहुत तब्दीली करके लोग उसको अपना एक अलग पैटर्न दे देते हैं कभी कभार। एडमंड स्पेंसर ने भी 88 सॉनेट्स लिखा था, तो उन्होंने उसके राइम स्कीम में परिवर्तन किया था। अब एक चीज ये होता है कि ये जो सॉनेट है ये किसके बारे में है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, द सॉनेट द सॉनेट इज अबाउट पोएट हिमसेल्फ, पोएट हिमसेल्फ, SELF, and his duty towards God, टूवर्ड्स गॉड। जो सॉनेट है ये पोएट के बारे में खुद है, और साथ ही साथ उसका क्या कर्तव्य है ईश्वर के प्रति, उसको लेकर के लिखा गया। तो द सॉनेट इज अबाउट पोएट हिमसेल्फ एंड हिज ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड। गॉड को लेकर के या गॉड के बारे में क्या नजरिया है या क्या उसकी ड्यूटी है, इन सब चीजों को लेकर के बात की जाती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि द सोनेट वाज कंपोज्ड, द सोनेट वाज composed after after being BEING, after being blind, after being blind of the of the poet,
तो जो सॉनेट है ये कंपोज किया गया आफ्टर बीइंग ब्लाइंड ऑफ द पोएट, जब पोएट अंधे हो जाते हैं तब जो है इसको कंपोज किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर बीइंग ब्लाइंड ऑफ द पोएट, नेक्स्ट पॉइंट, द पोएट हैज, the poet has desire to serve God. The poet has desire to serve God by writing beautiful poems. Beautiful poems. By writing beautiful poems, but he could not compose it, it because he could not compose it. But he could not compose it being a blind one. Being a blind one. He thinks he thinks the poet, he thinks God will rebuke, rebuke, rebuke मतलब होता है chide, फटकारना is called, God will rebuke him when his true account, his true account will be presented, when his true account will be presented, when his true account will be presented. So you find this key, will when his true account will be presented, जब उनका true account before, after his death, after his death, when his true account will be presented after his death. वो सोचते हैं कि जब मेरा सच्चा हिसाब किताब ईश्वर के सामने पेश किया जाएगा, और मैंने जो एक नियत मेरी थी कि मैं पोएम्स कंपोज करूंगा और गॉड की सेवा करूंगा, तो ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो व्हाट विल हैपन, दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, किस तरह की चीजें होती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एट्थ पॉइंट, गॉड, गॉड doth not need, God doth not need either man's work or his own gift। ईश्वर को ना तो किसी आदमी के काम की जरूरत है, ना ही जो है किसी आदमी के गिफ्ट की जरूरत है। एक मिनट, रेशमा। So you find that कि
what happens? God does not need either man's work or his own gift. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट माइट बी 11th पॉइंट. द ट्रू वर्शिपर, द ट्रू worshipper worshipper in the eye of God is one who stands and wait to follow his order, to follow his order, to follow his order. 12th point. Overall, Milton wants to say that the true servant of God is one who is loyal and dedicated towards him, towards him. So these things you find, and I just told you कि ये जो sonnet है क्या है कैसे है. नेक्स्ट पॉइंट करके आपको ध्यान में रखना अबाउट द पोएट. I will take only 2 minutes. I know that you have to go. Milton was a Puritan poet. Milton was a Puritan poet. The subject of the subject of his poem is the subject of his poem is religious, is religion, God and his devotee. Third point, he composed sonnets and epics. Sonnets and epics. Epics में उनका Paradise Lost, Paradise Regained, all these things you find. So what I did, I just only told you what you have to do और क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे जो है वो सब चीजें, आपको क्या क्या पॉइंट्स है. यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स एंड आई थिंक दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस पोएम. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए. नाउ कंक्लूडिंग हियर.